प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें 3 इक्वेशंस हैं एंड 3 वेरिएबल्स। Equation number 1, 2 and 3. X minus y plus 2z is equal to 7. 3x plus 4y minus 5z is equal to minus 5. And 2x minus y plus 3z is equal to 12. तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स एंड x, y और z की वैल्यू निकालनी है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आपको एनुअल एग्जाम में आएगा। और इसको करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 27 होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसको करने का तरीका ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, गिवन सिस्टम को लिखना है और तत्पश्चात इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, then it can be written in the form of capital A x is equal to B. Here capital A is the matrix of the coefficients made by these variables, that is 1, minus 1, 2, 3, 4 and minus 5, 2, minus 1 and 3. This is the first matrix A, and capital X is the column matrix of the variables, that is x, y and z. This is column matrix, and B is the column matrix of the constant of the right hand side of these equations. So that is 7 minus 5 and 12. तो सबसे पहला स्टेप यही है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखना और उसे ax is equal to b के रूप में कन्वर्ट करना और जहां a, x और b की वैल्यू मेंशन करना। इसके बाद अगला स्टेप है, सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड देन वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद उसको हमने ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स के बाद हमने एक फार्मूला लगा करके एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द होल प्रोसीजर टू सॉल्व this type of application. Now determinant of the matrix A, determinant is equal to 1, minus 1, 2, 3, 4 and minus 5, 2, minus 1 and 3. इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक्सपेंडिंग along first root, we get 1 into deleting the column and row in which this one is present, 4 minus 5 minus 1 and 3, and changing the sign of this number, we get plus 1, deleting the column and row, 3 minus 5, 2 and 3, and plus 2 into 3, 4, 2 and minus 1. After expanding, we get 1 into 4 into 3, 12, and multiplying this and changing the sign, we get minus 5, plus 1 into 9, and after multiplying, changing the sign, we get 10, and plus 2 into multiplying by minus 1 minus 3, and after multiplications 2 and 4, changing the sign, we get 8. Now it becomes 1 into 7 plus 1 into 19 plus 2 into minus 11.
and it becomes 7 plus 19 minus 22, that is 26 minus 22 is equal to 4, which is not equal to 0. Hence the given system of equations can be we can find the inverse of this system of equations. We can find the inverse of this matrix A. A inverse is exist because A is a non-singular matrix. तो बच्चों यदि हमने किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करना हो तो हमने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 then the matrix is singular, and if a determinant is not equal to 0 then the matrix is non-singular. और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसके कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी इनवर्स निकलेगा और तभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा यूनिक. तो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप to solve the system of equations. First of all, find the determinant of the coefficients of this system. Find the adjoint of this matrix. Now, adjoint of A is equal to cofactor matrix of whole transpose. Putting the values of these all cofactors, we get 7 minus 19 minus 11, 1 minus 1 minus 1 minus 3, 11 and 7 whole transpose. It may be written as dash or T. Then changing the row into column and column into row, we get 7, 1 minus 3 minus 19 minus 1, 11 minus 11 minus 1 and 7. This is the adjoint of the given matrix. Now A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant. A determinant is 4, that is 1 by 4 into adjoint of A, that is the given matrix. Now after finding the inverse, we can find the value of x, y and z. After finding the inverse of the coefficient matrix, we apply the formula capital X is equal to A inverse into B, because AX is equal to B, therefore X will be equal to A inverse into B. This is the formula. Therefore, applying this formula, putting the value of capital X, X, Y, Z, putting the value of A inverse, that is 1 by 4 into this matrix, and putting the value of coefficient matrix, constant matrix of the right hand side, 7 minus 5 and 12. Now after multiplying this matrix by this is 3 by 3 and this is 3 by 1. Therefore their product will be of 3 by 1. 3 rows and 1 column. And first row को first column से multiply करेंगे, first element आएगा. 7 into 7, 49, 1 into minus 5, minus 3 into 12, that is 36, minus 36. Minus 19 into 7, that is 133, negative sign, minus 1 into minus 5, plus 5, 11 into 12, that is 132. And similarly, third row को first column से minus 11 into 7, minus 77, minus 1 into minus 5, plus 5, 7 into 12, that is 84. This is a matrix of 3 by 1, 3 rows and 1 column. 1 by 4 into 49 minus 41, 137 minus 133, 89 minus 77. And it becomes 1 by 4 into 8 into 4, or third element will be 12. Now dividing each element by 4, we get 2, 1 and 3. This is a matrix, column matrix, this is a column matrix. Now, in order to find the value of x, y and z, because they are equal to each other, hence corresponding elements will be equal. Comparing the corresponding element, we get x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to 3. And this is the solution of this system of equations by matrix methods. तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल कर सकते हैं by matrix method, and we will get 6 marks
in the final examinations of such type of questions. We will get one question of such type of questions in the final examination in the term 1. Thanks. System of equations by matrix method, that is 2x plus y plus z is equal to 1. First equation, x minus 2y minus z is equal to 3 by 2, that is second equation, and 0x n plus 3y minus 5z is equal to 9, that is third equation. इस सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस को मैट्रिक्स मेथड से ही हल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज कैपिटल A x is equal to b. Here capital A is the coefficient matrix, that is 2 1 1, 1 minus 2 and minus 1, 0 3 and minus 5, and capital X is the column matrix of the coefficient matrix, that is x y z, and capital B is equal to 1 3 by 2 and 9. This is the column matrix of the right hand side. Now first of all let us prove that this matrix is non-singular. तो नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी. तो A determinant is equal to determinant of this matrix, and expanding along first row we get 2 into deleting the column and row in which this element is present, we get minus 2 minus 1 3 and minus 5, minus negative sign with this, minus 1 into deleting the column and row 1 minus 1 0 and minus 5, and after this plus 1 into deleting the column and row 1 minus 2 0 and 3, and after expanding we will get the value of a determinant. अब बच्चों इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं. यदि नॉन सिंगुलर है तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तभी हम सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस को हल कर सकते हैं. A determinant is equal to 2 into 10 plus 3 minus 1 into minus 5 plus 0 plus 1 into 3 plus 0, that we get 2 into 13 minus 1 into minus 5 plus 1 into 3, that is 26 plus 5 plus 3, that is 34, which is not equal to 0. Hence the matrix A is a non-singular matrix. Hence A inverse exists. तो बच्चों इस सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस को हम हल कर सकते हैं क्योंकि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं. इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस. तो नाउ लेट अस फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने हैं ऑफ ईच एलिमेंट. तो गिवन मैट्रिक्स इज A is equal to 2 1 1, 1 minus 2 minus 1 0 3 and minus 5. Therefore cofactor of the first element 2 is A11, that will be equal to M11, and deleting the column and row we get minus 2 minus 1 3 and minus 5 determinant, and after expanding we get 10 minus 3 and changing the sign we get plus 3, that is equal to 13. The cofactor of the first element A small a11 is 13. Similarly A12 cofactor of the second element, that is small a12, is equal to negative of the minor m12, that will be equal to negative of deleting the column and row we get 1 minus 1 0 and minus 5. After expanding we will get minus into minus 5 plus 0, that is equal to plus 5. So similarly we can find the cofactor of all other elements of this कोफिशिएंट में. अब हम अदर एलिमेंट्स के भी माइनर निकालेंगे एंड कोफैक्टर निकालेंगे. तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल a13 will be is equal to n13, that will be is equal to deleting the column and row of this element we get 1 minus 2 0 and 3, and we get the value 3. Similarly a21 minor of small a21, this element
will be is equal to negative of m21. That will be is equal to deleting the row and column. We get 1 1 3 and minus 5, and after expanding we get is equal to plus 8, and a22 is equal to m22. That will be is equal to deleting the column and row in which this element is present. We get 2 1 0 and minus 5, and after expanding we get the value minus 10, and 8 2 3 cofactor of this element. Deleting the column and row, we get 2 1 0 and 3, and taking the negative sign because a23 will be equal to negative of the minor m23, and after expanding we get the value minus 6, and similarly a31 is equal to m31, a32 will be equal to negative of m32, and a33 cofactor of this last element will be equal to capital M33, and after deleting the column and row we get 2 1 1 minus 2, and after expanding we get minus 4 and minus 1, that is equal to minus 5. And after finding these cofactors we have to find the adjoint of the matrix. अब बच्चों जैसे ही each elements के cofactors आ गए हमने adjoint निकालना है, तो adjoint का फार्मूला होता है adjoint of A is equal to cofactor matrix whose transpose. Substituting the values of cofactors A11, A12, A13, A21, A22, A23, A33, 31, A32 and A33. Here we get 13, 5, 3, 8 minus 10 minus 6, 1, 3 and minus 5. Its transpose. And taking the transpose is obtained by changing the column, rows into columns, We get this becomes 13, 5, 3, this becomes 8 minus 10 minus 6, and this becomes 1, 3 and minus 5. And transpose sign deleted. So this is the adjoint of the matrix. तो adjoint इस तरीके से बच्चों निकाला जाता है, और किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है I. सदैव A into adjoint of A is always equal to adjoint of A into A is equal to I. Identity matrix of the same type. So now A inverse is equal to adjoint of A upon A determinant, that is equal to 1 upon 34 into adjoint of A. तो adjoint of A की वैल्यू से हमने इनवर्स निकाल लिया A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. तो दिस इज आल्सो द प्रोसीजर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. यहां तक यदि इनवर्स ही निकालना हो किसी मैट्रिक्स का तो भी यही तरीका है बच्चों. तो अब हम एट लास्ट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z बाय यूजिंग दिस इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. बच्चों इनवर्स निकालने के बाद हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B in order to find the system of coefficients. We get value of capital X is x, y, z. Value of A inverse is 1 by 34 into this 13, 8, 1, 5 minus 10, 3, 3 minus 6 and minus 5. This is the inverse of the matrix A, and this is the matrix B, 1, 3 by 2 and 9. Now after multiplying this matrix by this is 3 by 3 and this is 3 by 1. Therefore, result will be of 3 by 1. 3 rows and 1 column. First row को first column से 13 गुना 1 जमा 8 गुना 3 बटे 2 जमा 1 गुना 9. दूसरा एलिमेंट होगा 5 गुना 1 माइनस 10 गुना 3 बटे 2 एंड जमा 3 गुना 9. लास्ट में होगा 3 गुना 3 माइनस 6 3 गुना 1 minus 6 गुना 3 बटे 2 and minus 5 into plus 9. And after calculation we get 13. After dividing we get 5.
here that is minus 15, and this is 27, and this is 13, and this is 12, and this is 9. And at last 3 and 3 2 is 6, and 3 3 is 9, and minus 45. And after adding, we get 34, we get 17, and we get minus 51. Now dividing each element by 34, we get 3 values, and they are 1, 1 by 2, and minus 3 by 2. This is a column matrix of 3 by 1, and this is also a column matrix of 3 by 1. They are equal, hence comparing the corresponding element, we get x is equal to 1, y is equal to 1 by 2, and z is equal to minus 3 by 2. Therefore, x is equal to 1, y is equal to 1 by 2, and z is equal to minus 3 by 2 is the solution of this system of equations. And if we put these values x, y, and z in any one of the equations, left hand side, it will be equal to the right hand side. In other words, these values of x, y, and z will satisfy the given system of equations if this answer is correct. So hence we can also check the solution is correct or not of this system of equations. That's all.